नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ वीकली मार्केट आउटलुक ऑन योर फेवरेट यूट्यूब फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल stockincome.in। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मैं एक रेगुलर ट्रेडर और इन्वेस्टर हूं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। आई डू दिस एनालिसिस फॉर माई ओन पर्पजेज। मेरे को अपने काम के लिए मार्केट का एनालिसिस रेगुलरली करना ही पड़ता है और वही एनालिसिस मैं आपसे शेयर करता हूं इस सीरीज में on a weekly basis, so that maybe you can also benefit from it. But standard disclaimer, this is only for educational purposes. It is not meant to be any advice. कुछ भी स्टॉक खरीदने या बेचने के एडवाइस ये नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर नहीं हूँ, राइट? दैट इज़ नॉट माई कोर जॉब। माई कोर जॉब इज़ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना एनालिसिस करें और मे बी यू वॉन्ट टू टेक एडवाइस ऑफ अ रजिस्टर्ड stock advisor, registered financial advisor, right? This is only for sharing on a best effort basis. Okay, let's move forward. So अभी आने वाला वीक है 22nd of August 2022. Let's see what my analysis is for this week. As always, मैं एनालिसिस को दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ, न्यूज़ और डेटा ड्रिवन फैक्टर्स और टेक्निकल्स, राइट? उन दोनों की हम बात करेंगे। तो न्यूज़ और डेटा की बात करें जिसमें कि की इंडाइसेस जो हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो निफ्टी इस वीक वॉज up by 0.34%, जबकि बैंक निफ्टी was largely flat. Actually, बैंक निफ्टी was also up, but on Friday, which is yesterday, बैंक निफ्टी fell sharply. So net for the week, बैंक निफ्टी minus 1.14%, निफ्टी up by 0.34%. Global indices S&P 500 slightly negative minus 1.21% and Nasdaq minus 2.62%, right? So overall week थोड़ा muted sideways to bearish रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी, राइट? एफआई और डीआई डेटा की बात करें, सो दैट बाइंग विच एफआईआईज हैव स्टार्टेड रिसेंटली दैट कंटिन्यूज। इस वीक उन्होंने करीब 3,200 करोड़ का सामान खरीदा, राइट? वाइल डीआईआईज आर यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू बुक प्रॉफिट्स, दे हैव बीन सेलर्स फॉर अराउंड 1,800 करोड़ फॉर दिस वीक। ऑन अ मंथली बेसिस ऑल्सो FIs are positive by about 18,000 crores and DIs negative by around 6,000 crores, right? Okay. India VIX. We know VIX is the volatility index, right? It's also called the fear index. अगर ये बढ़ जाता है तो that shows there is a fear in market, there is lack of confidence in markets, right? और VIX अभी काफ़ी दिनों से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, बट इस वीक बढ़ा है अराउंड 3.9% हायर देन द लास्ट वीक्स क्लोजिंग। बहुत ज़्यादा जंप नहीं मानते इसको हम, 3-4-5% वेरी करता है, बट द थिंग इज इट्स स्लाइटली द एब्सोल्यूट फिगर ऑफ 18.28 इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड। पीपल आर मोर कंफर्टेबल अगर ये 15 के लेवल 14-15 के लेवल पे रहे। सो दिस शोज अ स्टिल अ डिग्री ऑफ कंसर्न इन द मार्केट, राइट? एंड लेट्स सी हाउ इट हैपन्स मूव्स फॉरवर्ड। इट्स श्योरली डाउन फ्रॉम लेवल्स ऑफ 25-26 दैट वी सॉ अराउंड 2 months बैक, राइट? ओके। क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वर्ल्ड इकोनॉमी में और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी इन जनरल नीचे की तरफ थे, बट इस वीक थोड़ा सा बढ़े अराउंड इस वीक भी कम हुए हैं अबाउट 1.75%, राइट? एंड द क्रूड ब्रेंट क्रूड क्लोज एट अराउंड 95.1%, राइट? $95.1 पर बैरल। ओके, ऑन द होल एज आई सेड क्रूड प्राइसेस हैव शोन अ डाउनवर्ड ट्रेंड फ्रॉम द रीसेंट पीक्स अराउंड 130, करीब 27% का फॉल हमने देखने को मिला है, राइट? बट ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस ये अभी भी ज़्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमी इज हैप्पी, पीपल आर हैप्पी टू हैव क्रूड समवेयर इन द रेंज ऑफ $65 to $70। उससे ऊपर महंगा लगता है क्रूड, इकोनॉमीज की ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, राइट? सो वी होप क्रूड कम्स डाउन, राइट? सो $65-70 के बैरल पे ऑयल प्रोड्यूसर्स भी कमाते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी भी थोड़ी सपोर्टेड रहती है, राइट? Around prices of $95, $100 are still high. Let's see. We have not talked much about Japanese economy in the recent past, and Japan, let's not forget, is the third largest economy of the world, and recently it has expanded in 3 months up to June and it grew 0.5%. Japanese economy बहुत slow up या down जाती है हमेशा ही, right? And so it has grown, which is a very positive sign. However, grown a little lesser than what market expected. Market expected 0.7%. It has grown about 0.5%, but still a positive, right? So जापान में भी इन्फ्लेशन का थोड़ा प्रॉब्लम अभी सामने आ रहा है। अभी बहुत अलार्मिंग फिगर्स नहीं है, बट प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। वी नो वर्ल्ड एट लार्ज, हमने कई बार बात किया,
हाई प्राइसेस से, इन्फ्लेशन से स्ट्रगल कर रहा है, वेदर इट्स यूएस, वेदर इट्स यूरोजोन, वेदर इट्स इंडिया, राइट। इंटरेस्ट रेट्स भी इसलिए सेंट्रल बैंक्स ने बढ़ाए हैं। तो जापान में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बात करें यूके की इन्फ्लेशन की, यूके इज स्टिल कंटिन्यू टू सफर विद हाई इन्फ्लेशन रेट्स, राइट। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन टू द लेवल्स व्हिच आर हाईएस्ट इन 13 years, राइट। द फूड प्राइसेस, द इन्फ्लेशन इज at a level which is around 40 years high, right? This is significant, and there is a warning that it might go up to even, right now it's around 9.1%, it might go even up to 13.3% and maybe peak there. So inflation is causing trouble there also. आइए मिलते हैं हमारे मिस ज्ञान कौर से, राइट। आप जानते हैं ज्ञान कौर तो बिल्कुल ज्ञान की गंगा हैं, राइट, वेरी नॉलेजेबल, और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, बार बार आती रहती है हमारे शो पे। तो इस बार उन्होंने क्या बताया, लेट्स सी। दिस टाइम शी इज टॉकिंग अबाउट द रीसेंट रैली। सी, वी हैव सीन दैट इन लास्ट 2 months वी हैव हैड अ वेरी गुड रैली इन द मार्केट्स। फ्रॉम द रीसेंट लोज मार्केट हैज ग्रोन अराउंड 18-19%, निफ्टी अगर बात करें, राइट। मिड कैप वगैरह और बैंक निफ्टी उससे भी ज़्यादा ग्रो किए हैं। तो उसकी रीज़न, उसका रैली का रीज़न क्या रहा है, ये हमने ज्ञान कौर ने मेरे से डिस्कस किया, राइट। सो commodity prices reduction is one thing that has happened world over. Commodity prices were just moving up in one direction, they've corrected a bit, so उससे थोड़ा सा मार्केट्स को रिलीफ मिला है, मार्केट्स हैव स्टेबलाइज्ड एंड मूव अप। क्रूड ऑयल का हमने बात किया कि ट्रेजेक्ट्री हैज बीन डाउन, डायरेक्शन हैज बीन टुवर्ड्स डाउन, प्राइसेस कुछ कम हुए हैं। अभी 2 महीना पहले लगभग $130 का क्रूड मिलता था पर बैरल, अभी 195 के करीब है अभी, सो अराउंड 27% ड्रॉप, दैट हैज हेल्प्ड द वर्ल्ड मार्केट्स। इन्फ्लेशन टेपर हो रहा है, इन्फ्लेशन, इंडियन इन्फ्लेशन जुलाई में और इवन यूएस के इन्फ्लेशन जुलाई में हैज द फिगर्स आर लोअर देन बिफोर, राइट। सो इन्फ्लेशन भी टेपर हो रहा है, उससे भी रिलीफ मिला है। सो द मार्केट्स ने, जो सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, दैट सीम्स टू बी वर्किंग, राइट। सो दैट इज अ बिट ऑफ रिलीफ, कॉन्फिडेंस टू द मार्केट्स एंड मार्केट्स हैव मूव्ड अप। क्वार्टरली रिजल्ट्स हमेशा, there are always some good surprises, always some surprises on the negative side, but overall इस बार जो Q1 के results जो आए हैं अच्छे आए हैं। There have been many good surprises and that has given confidence in the markets, so people are now happy with the markets and that has shown in the results in the market, right? FI buying has resumed. We know that in the month of June, etc., till the month of June, there was a heavy selling by FIs, right? To the range of around 58,000 crore. उससे पहले मे भी अराउंड 53,000 करोड़ का सेलिंग हुआ। उससे पहले कई महीने, 8-10 महीने तक कॉन्स्टेंटली एफआईज ने सेल किया, दैट वाज पुशिंग द मार्केट्स डाउन। अभी जुलाई में दे वर ऑलमोस्ट एट पार, दे वर नेगेटिव बाय अबाउट 6,000 करोड़, राइट। एंड अगस्त में वी जस्ट सीन दे आर क्वाइट पॉजिटिव सो फार, सो दे कॉन्स्टेंटली बाइंग विच हैज हेल्प द मार्केट्स गोइंग अप। एट द सेम टाइम going forward looks a little tough. Why? Because markets have moved up very sharply and they seem to be overheated, and there's some technical levels around 17,900 जहाँ पर markets को cross 17,900, 18,000 cross करना मुश्किल लग रहा है for a short time. So markets might take a breather here. This is what ज्ञान कौर also feels, right? Okay, बात करते हैं technicals की। अगर हम technicals को देखें तो Nifty currently is around 18,700, right, close to those levels, and it is facing a bit of resistance 18,000 के करीब, right. There is a technical resistance at 18,100 levels, and but there is also a good support at 17,400 levels. बाकी के levels भी मैंने चार्ट में लगाए हैं, आप देख सकते हैं, but I feel Nifty could trade between these two levels in this week, which is 18,100 on the upper side, 17,400 on the lower side. Let's see what the options data tells us. So options data बात करें, इस साइड on the left hand side there is a calls data and on the right hand side there is a puts data. तो calls में हम बात करें तो we have seen a huge option interest build up at 18,000 levels, which shows resistance, right? And there is also a good interest build up at 18,500 levels. Overall अगर हम देखें तो calls की साइड में near strike price पे interest rate काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, open interest. So that tells us there is a resistance, market might face resistance going up. On the lower side, there seems to support around 17,500 and 17,000 levels, right? I think 17,500 itself, 17,600 itself, there is sufficient open interest to support the markets, right? But if you notice 17,800 को मैंने red box में लगाया because यहाँ पर भी काफ़ी open interest है,
राइट। कुछ कम भी हुआ है बट अभी भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है, पर मार्केट ऑलरेडी इससे नीचे है और इनफैक्ट कल उससे फ्राइडे को उससे नीचे क्लोज हुआ और उसके बाद SGX निफ्टी उससे भी ज़्यादा डाउन हुई है रात को, राइट। सो दीज आर द पीपल हु माइट बी इन ट्रबल। जिसने यहाँ पर सेलिंग करा है, पुट्स बेचा है, दे माइट बी इन ट्रबल इन द व्हेन द मार्केट्स ओपन ऑन मंडे ट्यूसडे। They might have to run for cover, they might have to cover their positions, which might push the markets down further. So let's see what really happens, but I feel these guys could be in a bit of trouble, at least on a day-to-day basis, right? Bank Nifty की बात करें तो again Bank Nifty has shown a very good rally in the recent past, and 40,000 level seems to be a resistance now, which it might not cross in my opinion for this week. And on the lower side, while there is a support at 38,000, I feel that could be violated, and Nifty might take support around 36,800 levels. So I feel Bank Nifty could trade in the region of 40,000 to 36,800 in the coming week. Option chain की बात करें Bank Nifty के तो we see there is a lot of open interest at 39,000 levels, which is again I marked in red क्योंकि मुझे लगता है कि these people might have to run for cover the put sellers, right? This level is likely to be violated, already violate हो चुका है actually कल के closing basis पे. So these guys might have to run for cover, but I think there is good support at 38,000 levels, so that might that is likely to help. और अगर वो नहीं होगा तो फिर 36,800 तो हमने बोला ही है, right? On the upper side, Bank Nifty likely to face resistance in the region of 39,500 and 40,000. So in my opinion, markets will consolidate with a bit of a bearish bias in this coming week, right? That's my opinion, but we have another opinion. So we have our in-house market expert, Mr. Oreo. He's been on a vacation for last few weeks. He's not been coming to the show, but he's back and back with a bang. So we'll take his opinion. Mr. Oreo, you know, is a four-legged expert. So he's got some more legs in the market, right? Literally speaking, since he is a Shih Tzu. So, and we just invited him over to have his opinion on the markets on a lighter side. Let's see what Oreo has to tell us for this week, which is starting 22nd of August. So we have Mr. Oreo with us, and let's take his opinion for the market direction for the week starting 22nd of August. So Mr. Oreo, welcome to the show. So we need your opinion, your expert advice. किधर जाने वाला market? Up या down? 22nd week, 22nd August का जो week है, please बताएं. Please pick up a direction. Don't think so hard, Mr. Oreo. We need your help. Please. No, you can't run away. Sorry. Oreo, markets up or down? Oreo, tell us, markets up or down? Mr. Oreo is clearly bearish for this week. He feels markets are going to go down. He's picked up red, and that's it. So we have no choice but to agree with him, and let's see what really happens during the week. Okay friends, on this note, I'd like to thank you for spending your time, for being with me, for liking, for sharing, for commenting. Do continue to participate, do share the channel and the videos, right? That's how we all grow together, and let me know what you think about it. My only objective is to share my analysis and maybe hopefully add meaning to your trading and investing journey as well. Thank you, God bless, Jai Hind.